Good morning, students. Students, as you know that in our previous video we were discussing about connective tissues of animals, and in the previous video we discussed about loose connective tissue. Students, as we studied there, loose connective tissue is composed of three different things. What are these things? The cells, which are composing tissue, and some special kind of fibers, and finally the substance which is called matrix, in which the fibers and the cells are suspended or distributed. So similar to the loose connective tissue, in dense connective tissue also, it also contains cells, fibers and matrix. बट द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, जो मेन बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, हेयर इन केस ऑफ dense connective tissue, the cells as well as the fibers, either the cell is fibroblast or any other kind of cell, these cells are compactly packed, as well as the fibers are also compactly packed. So that's why it is called as dense connective tissue. Means the density of this tissue is quite higher than the loose connective tissue. Means the fibers and the cells are compactly packed in case of the dense connective tissue. Now the another feature I am going to discuss here. Now if you will see the structure of this tissue, so sometimes you will find out that fibers are irregular in orientation. Means जो scattered हैं आपके मैट्रिक्स में कोई orientation नहीं है, मतलब बिना किसी ओरिएंटेशन के इधर उधर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं. तो सच काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सच काइंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज dense irregular connective tissue. Are you getting my point? Now I want to show you in the figure. Now here in this figure you can see that dense irregular connective tissue. Now try to identify the things. You are observing here cells which are referred as fibroblast. ठीक है, and you are observing collagen fibers are here. You are observing various collagen fibers, and you can observe that these are scattered without any pattern, without any orientation. मतलब कोई इधर बिखरा हुआ, कोई उधर बिखरा हुआ. There is a no fixed pattern of their orientation. ठीक है, so that's why this kind of dense connective tissue is called as dense irregular, because कोई रेगुलरिटी नहीं है फाइबर्स में, कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है इनका. ठीक है, ऑन द एंड सच काइंड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन आवर स्किन. तो ये हमारी स्किन पे पास प्रेजेंट होता है. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड एज dense regular connective tissue. And why it is called dense regular connective tissue? Because here the fibers show a regular orientation pattern. क्योंकि यहाँ पे जो fibers होते हैं, these are arranged in a regular orientation pattern. ठीक है, and since they are also densely packed, so that's why it is called as dense regular connective tissue. And dense regular connective tissue is of two different types, the tendons and ligaments. तो ये दो टाइप का होता है आपका dense regular. What are tendons and what are ligaments, I am going to tell you right now. Before it, you can see the here. Now what is the diagram says, you are observing here, this is the diagram of the dense regular connective tissue. Here you are observing rows of collagen fibers. ठीक है, means collagen fibers is present in the form of rows, or there is a fixed pattern or a fixed orientation or a regular orientation. So that's why this is called as regular, dense regular connective tissue. While here you can see that there is no pattern of the arrangement of the fibers. So this is the difference between dense regular and dense irregular. Another thing is same, here it has also some fibers which are some cells which are called as fibroblast. Now as I mentioned earlier that dense regular connective tissue is of two different types. Now what are these two types? Tendon and ligament. Now what are tendons? I am going to tell you that tendon is a kind of dense regular connective tissue that binds muscles विद द बोन्स. यानी कि ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह का रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो किसको बाइंड करता है. सिंस इट इज़ अ बाइंडिंग टिश्यू, तो जाहिर सी बात है इट विल हेल्प इन द बाइंडिंग. तो किसको बाइंड करेगा? इट बाइंड्स मसल्स टू बोन. बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, इट बाइंड्स दीज स्केलेटल मसल्स टू बोन्स. while on the other hand, ligament is also a kind of dense regular connective tissue, and but it बाइंड्स बोन टू बोन. यानी दो डिफरेंट बोन्स को आपस में जॉइन करने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है. इज इट क्लियर? इट इज़ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस वन बोन टू द अदर एंड होल्ड्स देम इन पोजीशन ऑफ द जॉइंट. यानी इनको जॉइंट्स में इनको फिक्स पोजीशन में रखने का काम भी करता है. इज इट क्लियर? इन दिस फाइब्रोब्लास्ट एंड आर स्कैटर्ड इन
एंड द कोलेजन फाइबर्स आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोज में आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स में। इज इट क्लियर? नाउ फाइनली आई वांट टू डिफरेंशिएट व्हाट आर टेंडन्स एंड व्हाट आर लिगामेंट्स। आई हैव अ table, and in with the help of that particular table you can easily differentiate what are tendons and what are ligaments. So basically what are tendons? Tendons are the dense regular connective tissues which are made up of white fibrous tissue, ठीक है, and these are rich in collagen protein, while ligaments are composed of yellow elastin fibers, ठीक है, and these are rich in elastin प्रोटीन्स। तो इनमें कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा होती है टेंडन्स में, तो इसमें क्या होती है, इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा होती है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि टेंडन्स आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू वाइल लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। तो टेंडन्स जो है वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने हुए हैं और लिगामेंट जो है आपके येलो इलास्टिक टिश्यू के बने हुए हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लाई ऑलमोस्ट इन कंटिन्यूस रोज। तो एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो दैट कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं दीज आर अरेंज इन द कंटिन्यूस रोज, वाइल इन केस ऑफ द लिगामेंट द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड, एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो। ठीक है कि जो आपका टेंडन्स होते हैं इसमें फाइब्रोब्लास्ट फिक्स पैटर्न में आपके अरेंज होते हैं, वाइल द लिगामेंट्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ टेंडन्स आर टफ इन एंड इन इलास्टिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं थोड़ा सा टाइट होते हैं, थोड़ा सा रिजिड होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। कंपेरेटिवली लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बट हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट एंड फोर्थ वन पॉइंट, एज यू नो दैट, ठीक है, टेंडन बाइंड्स और कनेक्ट्स मसल टू बोन वाइल लिगामेंट्स आर बाइंडिंग और अटैचिंग बोन टू बोन, मीन्स दे कनेक्ट अ बोन टू अनदर बोन। ठीक है, इट ऑल्सो कनेक्ट सम पार्ट it also connects other parts together for support of an organ too. So basically it connects bone to bone, you must have to remember this one point, ठीक है। And while the tendon connects skeletal muscle or muscle to bone, ठीक है। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड आई होप सो कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट आर इट्स टू डिफरेंट टाइप्स, डेंस रेगुलर and dense irregular, and you know very well that dense regular is further classified into two types, tendons and ligaments, and what are the differences between tendon and ligaments, ठीक है। So still if you are feeling any difficulty you can concern with me, ठीक है। Once again I will meet you in the next video, till then thank you, bye bye and have a nice day.